time has come to cast away that frail mortal shell. Join me in eternity.
देवियों और सज्जनों, भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, वापस आ चुके हैं हम आज के ग्रैंड फिनाले के साथ जो हो रहा है द प्रीमियम अरीना पे। यहाँ पर हमारे पास इंडिया की, वो तो नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट टीम है जिसका नाम है आईजीएन, लीडर बोर्ड पे, एलिट लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे है। और अगर वो मिथिक लीडर बोर्ड में होते तो डेफिनेटली वो अपनी टॉप 5 की रैंकिंग में होते, क्योंकि उनके पॉइंट्स की बात करें तो उनके पास ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स हैं एलिट लीडर बोर्ड में। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है एटर्नल टॉर्मेंट, जो एक टोटली न्यू टीम है, अंडरडॉग टीम है, और वो आज फाइनल्स में आईजीएन से मिलने वाली है। मैं हूं आरवी और मेरे साथ मित्र हैं एसएम गेमर। चलते हैं जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप इस टीम के बारे में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं टीम एटर्नल टॉर्मेंट को देखने में कि वो कैसे कंपीट करते हैं आईजीएन के सामने, जो एलीट लीडर बोर्ड की नंबर 1 टीम है अभी के दौरान। तो बिल्कुल आरवी, आपने जिस तरह से कहा आप बिल्कुल एक्साइटेड हैं, तो हम भी एक्साइटेड रहेंगे उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि टीम आईजीएन जिस टीम के बारे में बात करें तो उसने अपना अच्छा खासा नेम फेम सब बनाए रखा हुआ है, एक वर्चस्व भी है। लेकिन रिसेंटली कुछ मैचेस में देख रहे हैं तो काफी सारी अंडरडॉग्स टीम के सामने वो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करते हुए जूझ रहे हैं। रोस्टर सफल्स कह लें या फिर सिनर्जी इश्यू कह लें, जो भी वो फेस कर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बट हो सकता है कि वो ज्यादा देर तक टिके नहीं, आज एक बार फाइनल में आए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे द प्रीमियम अरीना ग्रैंड फिनाले के अंदर वो किस तरह का परफॉर्मेंस देने के अपना जो कमबैक है वो दिखाते हैं, या फिर एक बार फिर जो है वो कुछ चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। अंडरडॉग टीम्स जो है वो कुछ करके दिखाएगी। अब चलते हैं बैन एंड पिक की तरफ। तो जिस तरह से हमने सुना कि हम वो भी देखना चाहेंगे, टीम इटर्नल जो है वो लूकस या हैरिस जो है पिक करते हुए दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं, क्योंकि अभी तक बैन सूची के अंदर दिखेंगे, क्योंकि 4 बैन अभी भी आना बाकी है। मैथिल्डा बैन हो चुकी है, उसके साथ साथ देखिए जूशिन भी बैन हो चुकी है। तो उसके अलावा क्या लग रहा है कहकर और दोस्त की बैन जो है एज यूजुअली या फिर कुछ अलग भी हो सकते हैं? देखो यार, 90% चांसेस है कि हमें कॉमन बैंस देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली हर टूर्नामेंट में होता है। और हाइलोज एक वन ऑफ द मेजर पिक है अभी के मैचेस में या टूर्नामेंट्स में कह लें, तो यहाँ पर हाइलोज हमें एज अ रिस्पेक्टेड बैन देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी बैंस की बात करें तो हमें यहाँ पर जॉय बैन देखने को मिल सकता है, लूकस बैन देखने को मिल सकता है, और उसके साथ हमें क्या कहते हैं अपना रेंजर एज अ बैन देखने को मिल सकता है। बट टोटली डिपेंड करता है कि टीम्स की स्ट्रेटेजीज क्या हैं, आज ये अपने पिटारे में कौन सी स्ट्रेटेजी भर के लाए हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे। क्या ये अर्ली गेम हीरोज की तरफ जाएंगे, क्या ये मिड टू लेट गेम हीरोज की तरफ जाएंगे, अर्ली गेम में स्टन हीरोज इनके पास ज्यादा होंगे या टैंकी हीरोज ज्यादा होंगे। तो टोटली डिपेंड करता है क्या स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। इसी के साथ हमें किलिया बैन देखने को मिलेगी इटर्नल टूर्नामेंट की तरफ से। और यहाँ पर फाइनल थर्ड बैन यानी फर्स्ट बैन का, फर्स्ट फेज का लास्ट बैन देखने को मिलना है वे विच की तरफ से। विच की बात करेंगे तो ये इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये इकलौते ऐसे प्लेयर है जिसने एपेक्स के साथ स्टेज शेयर किया था एमएससी 2024 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, सॉरी 2024 में किया था ना। क्या टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसमें विच और एपेक्स ने एज अ T2 के मेंबर्स एमएससी 2024 में इंटरनेशनल स्टेज शेयर किया था। तो इससे दर्शाता है कि जो हमारी टीम आईजीएन है उनके पास अनुभव की बात करें तो वो इटर्नल टूर्नामेंट के कंपैरिजन बहुत बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ लोकस को बैन कर दिया गया एसएम भाई। चलिए अच्छी बात है उनके लिए भी। और अभी देखते हैं कि वो रिस्क लेंगे क्या। हैरिस उनका भी अच्छा चयन होता है वो जिस तरह से हमने सुना, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो एंड सुयो भी ऑप्शन में निकल के आ जाता है। अब वो देखते हैं कि पहला पिक कौन सा लेना चाहेंगे। क्या वो एरॉन द क्रिएटर के लिए ग्रेंजर की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए एरॉन जो है काफी अच्छा खेल लेते हैं ग्रेंजर, या फिर वो रिस्पेक्ट की तरफ जाना चाहेंगे। देखिए रिस्पेक्ट और फैनी भी ओपन रह चुका है, ग्रेंजर भी ओपन रह चुका है। काफी सारे चयन ना अभी निकल के आ जाते हैं, हैरिस, ग्रेंजर, फैनी। देखते हैं कौन सा चयन टीम आईजीएन करती है। इसी के साथ टीम आईजीएन के मीरियो यहाँ पर जाएंगे बदंग के साथ। ये जंगली लड़का आजकल बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसकी बॉल प्लस अल्टीमेट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसमें फंसते हैं, ये आपको मुकालात की मशीन में डाल के आपकी चटनी बना देता है। तो ये चटनी आप कभी भी डोसा के साथ खा सकते हैं या इडली के साथ खा सकते हैं, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। बट अगर ये चटनी बनती है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगे इटर्नल लेजेंड्स की। देखते हैं वो बदंग को काउंटर करने के लिए कौन से हीरोज के साथ आते हैं। यहाँ उन्होंने उठा लिया फोवियस अच्छा है यार, बट क्या डैश हीरोज आईजीएन जाने वाली है? अगर आईजीएन डैश हीरोज के साथ जाती है तब तो आपका फोवियस बहुत बहुत अच्छा है। बट फोवियस के पिक के साथ ही जो आईजीएन की प्लानिंग होगी डैश हीरोज लेने की, आप हैरत की बात कर ले तो हैरत मुझे नहीं लगता आईजीएन की तरफ से देखने को मिलने वाला है। तो 90% चांस है कि जो टीम आईजीएन हैरत को बैन करेगी नेक्स्ट उसमें। और भाई इसी के साथ पूनी
PUNN नंबर 1 ने भाई पिक कर लिया है फैनी। बहुत बहुत दिनों बाद मैं फैनी देख रहा हूँ एसएम भाई टूर्नामेंट में, क्योंकि नॉर्मली लोग टूर्नामेंट में फैनी पिक नहीं करते। फैनी को काउंटर करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। आप थोड़ी सीसी हीरोज के साथ चले जाए, स्टन हीरोज के चले जाए, बेचारी फैनी यूजलेस हो जाती है। तो क्या यहाँ पर टर्नल टूर्नामेंट एक प्रॉपर गेम प्ले पुल आउट कर पाएगी फैनी की मदद से? और मैं कह रहा था कि शायद हैरत ना देखने को मिले, बिकॉज फोवियस पिक हुआ और यहाँ पर आईजीएन चैलेंज करती हुई नजर आ रही है, ललकारती हुई नजर आ रही है कि दहाड़ते हुए कि भाई तुम कुछ भी उठा लो, हम तो हमारे मेन हीरोज के साथ ही जाएंगे। तो एरन द क्रिएटर यहाँ पर हैरिस का साथ देखेंगे, गोल्डलेन मॉर्जी के साथ, तो हमारे शोजन है जो भी है, उन्होंने भाई पिक कर लिया घटोत्कचा। और कल हमने देखा था कि जो एबीएम वर्सेस टीआरटी हुआ था उसमें घटोत्कचा ने एक अहम भूमिका निभाई थी लास्ट गेम, और इसी के साथ ग्रेंजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे एसएम भाई, ग्रेंजर अगेंस्ट हैरत, क्या ये एक अच्छे पिक है या फिर हमें दिक्कतें देखते हुए बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है कि हैरत थोड़ा सा अपर हैंड रखेगा ग्रेंजर के ऊपर। हैरिस अपर हैंड रखेगा ग्रेंजर के ऊपर। देखिए मैच जैसे आगे बढ़ेगा वो तो खैर पता चल ही जाएगा, लेकिन वो पिक की बात करें तो एक लाजमी पिक देखने को मिलते हैं। ज्यादातर करंट मेटा के हिसाब से यही पिक जो है वो बनते हुए दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से बात किया फोवियस की, पोनी, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है दोस्त, पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किस टूर्नामेंट पे देखा था। लेकिन बंदे का फैनी देखा हुआ है मैंने, पुनी अच्छा खेलता है। एलसीएफ में खेला था जहां तक मेरे को याद है, पुनी एलसीएफ का मेंबर था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर ये वही हाँ पुनी है तो। हाँ, मे भी हो सकता है। And दूसरी तरफ देखिए गाटो का जो चयन है उजाउजन ने किया है, काफी कमाल का वो खेल लेते हैं। एक जबरदस्त टैंक है। लास्ट टाइम जब लेन इवेंट हुआ था तब नागालैंड की टीम से वो खेलते थे, डिवाइन रेजिम से। उसके बाद जो है रोस्टल सफल के बाद टीम आईजीएन में उनका चयन हुआ है। एक अच्छे रोमर है वो भी, उनके पास गाटोट आ चुका है, या फिर वो सफल होगा और बादाम के साथ जाएंगे वो देखते हैं, गेम के अंदर पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली वो रोमिंग के साथ ही जाते हुए दिखेंगे। अब उसके अलावा अगले बैन की तरफ चलते हैं तो देखिए लो ये बैन हो चुका है। ईव अभी भी ऑप्शन में निकल के आ रहा है। ईव जो है काफी कमाल का खेल लेते हैं यहाँ पे वेज, और उसके अलावा काफी सारे और ऑप्शन है। और यहाँ पे फारसा चलिए बैन करेंगे, एंड सिसिलियन जो है वो भी एक ऑप्शन निकल के आ जाता है वैसे। बिल्कुल, सिसिलियन एक अच्छी खासी पिक है अगर आपको लेट गेम की तरफ गेम को खींचना है, लेट गेम में अपनी टीम को डिफेंड करना है। बट जैसे बात करते सिसिलियन की, उसको भी बैन कर दिया जाएगा। मोस्ट जो हमारे मेजर मेज पिक्स थी उनको बैन कर दिया है, सिर्फ ईव यहाँ पर पेंडिंग है और देखते हैं ईव यहाँ पर पिक होती है कि नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बाकी किसी मैच की बात करें तो मुझे अभी वैलेंटीना एक अच्छा पिक यहाँ पर साबित हो सकती है। वैलेंटीना के पास अल्टी कॉपी करने का चांसेस रहेगा, वो ग्रेंजर की सॉरी बदन की अल्टी कॉपी कर सकती है, कटुत्कचा की अल्टी कॉपी कर सकती है। बट देखते हैं हमारे जो साइलेंट हैं वो कितने वायलेंट होकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं, कौन से हीरोज के साथ जाते हैं। और साथ में हमारे पास लास्ट वाला नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई, अगर आपको याद है बिटॉस्की एक टाइम पे एक बहुत बड़े जाने माने यूट्यूबर होते थे, उनका फेवरेट चाइल्ड यहाँ पर आ चुका है। तो क्या लगता है हमारे बिटॉस्की के जो फेवरेट चाइल्ड हैं कुछ कर पाएंगे? और मैं वैलेंटीना की बात कर रहा था, इसी के साथ वैलेंटीना का अवतरण यहाँ पर हो चुका है। तो चलो हमारी भविष्यवाणी थोड़ी थोड़ी साबित सही हो रही है। अब आगे से हम एस्ट्रो टॉक पे जाएंगे और एसएम भाई आएंगे अपनी शादी के बारे में पूछने। बिल्कुल सही कह रहे हो ना एसएम भाई? ये कुछ ज्यादा देखो एस्ट्रो टॉक पे, देखो एस्ट्रो टॉक की जितनी एड्स आती है उसमें ही होता है, एस्ट्रो टॉक पे जाओ, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है पूछो, शादी नहीं हो रही है पूछो, नौकरी नहीं लग रही है पूछो। तो नौकरी की तो आपको जरूरत है नहीं, गर्लफ्रेंड आप बनाओगे नहीं, तो एक ही एस्ट्रो टॉक सवाल में मैं आऊंगा तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि मोबा 5v5 कब लैन इवेंट लेके आ रहा है? नहीं लेके आ रहा है। मैं भी बता देता हूँ नहीं लेके आ रहा है। चलिए मुद्दे की तरफ वापस बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुकाबला जो है ग्रैंड फिनाले का है। तो एस्ट्रो टॉक, चलिए आपको थोड़ी देर के लिए हम विदा देंगे। पेटोस्की के फेवरेट चाइल्ड तो क्या लेते हैं वो भी देखना रहेगा। अब देखिए दूसरी तरफ हम इंतजार कर रहे थे, वेक्सेना दिखाया जरूर, लेकिन मजेदार चीज ये है कि मिड लेन के अंदर हमको सेलेना दिखने वाले हैं और उनके सामने वैलेंटीना रहने वाले हैं। अल्टी कॉपी तो जरूर होगी, बादाम की अल्टीमेट के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा नजरें निगाहें उनकी रहने वाली जरूर है। अब आखिरी पिक इनकी तरफ से एक जबरदस्त रोमिंग हीरो वो तलाश रहे हैं, कौन सा बनता है? एक और भविष्यवाणी की जाए महाराज जी। टीम एटर्नल थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है कि पिक करे तो करे क्या। ठीक है, उनके और आईजीएन के पास फ्रंट चार्जिंग हीरोज भी हैं। हेड किसको टारगेट करेगा, मैं इस चीज को कंफ्यूज देखूं। वो हायाबुसा को टारगेट कर सकता है, उसके शैडो को एंड तक फॉलो कर सकता है, बट इतना अंदर अगर आप जाओगे तो आपके वापस आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जोहेड एज अ रोमर पिक यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है टीम एटर्नल्स के लिए। इनको एक थोड़ा सा और डिपेंडेबल हीरो की यहाँ पर जरूरत थी।
वो डिपेंडेबल हीरो मुझे नहीं पता क्या हो सकता था, बट जरूरत थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा यहाँ पर क्या जा सकते। या मटिल्डा की तरफ जा सकते थे, अगर मैं गलत, मटिल्डा बैन है, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। बैन है। हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। बहुत शानदार पिक है। अब हम चलेंगे हमारे मेन युद्ध भूमि की तरफ, जहां पर दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ती झगड़ती नजर आएंगी। बाकी मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एसएम भाई। एक तरफ बहुत बहुत एक्सपीरियंस टीम है, उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ, उसने लैन इवेंट खेला, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, अपने लीडर बोर्ड में नंबर 1 है। दूसरी तरफ एक अंडरडॉग टीम है, जिसका नाम भी मैंने आज पहली बार सुना है, ठीक है। तो क्या लगता है जो मैच का समीकरण रहने वाला है कैसे रहेगा? क्या हमें एक इजी मैच देखने को मिलेगा या थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा? हम आ चुके हैं लैंड ऑफ डॉन में। और दूसरा मेरा फेवरेट सवाल, कौन लेके जाएगा फर्स्ट ब्लड? आईजीएन, एटर्नल टूर्नामेंट? एटर्नल टॉर्मेंट, आईजीएन, देखिए जाउजन लेके जाएगा या फिर बिटोस्की लेके जाएगा। ये एक जबरदस्त गैस रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये लेके जाएंगे, मजा तो इसी में आएगा। एंड आप बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा, देखिए एक तरफ एक्सपीरियंस लेके जरूर आते हैं, लेकिन उनके सामने अंडर गॉड्स खेल रहे हैं। अंडर गॉड्स टीम जो होती है ना, उनका एक्सपीरियंस इस तरह का होता है, जैसे कई बार समझ लें आप आईजीएन का एग्जांपल ले ले कि वो टीम एलसीएफ के सामने खेल रहे हैं, तो दे नो हाउ एलसीएफ प्ले, उनको पता है उनकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, किस तरह से उनका रोटेशन आता है। बट कई बार जब हमारे सामने एक ऐसी टीम आ जाती है जो अंडर गॉड्स है, फिर उनकी रोटेशन, उनकी स्ट्रेटेजीज कई बार चकाचौंध कर देती है। अब इटर्नल टॉर्मेंट जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, क्या चमत्कार कर दे, अक्सर कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार, तो वो भी हो सकता है। इन करंट फॉर्म जो है काफी खराब चल रहा है, बट उनके लिए भी ये फिनाले काफी महत्वपूर्ण होगा। एक्सपीरियंस लेके जरूर चलता है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना काम आ पाता है वो देखना जरूर रहेगा। इंतजार कर रहे हैं, अभी तक थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए थोड़ा अग्रेशन यहाँ पे बनाए जरूर रखा हुआ है, पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे यहाँ पे फोबियस को, वो पीछे जरूर हटेंगे। मिड लेन की तरफ उन्होंने खुला छोड़ दिया है अपना जो मैदान है, जंग जो है। दूसरी तरफ वो हैरिथ की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सपी लेन में यहाँ पे गेंग जरूर होती है, लेकिन इंस्टेंट रोटेशन फोबियस की तरफ वो जा नहीं पाए, तो इंस्टेंट रोटेशन ये आवश्यक है, ये जरूरी है। तो देखिए सूझबूझ के समझ के साथ तो जबरदस्त खेल रहे हैं। फोबियस की एचपी बहुत ज्यादा लो है भाई, शायद हमें यहाँ पर फर्स्ट ब्लड देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली फर्स्ट ब्लड मिल गया। इसी के साथ टॉप लेन में फैनी ने यहाँ पर किल चुरा लिया है, हैरत को यहाँ पर धराशायी कर दिया। तो फर्स्ट ब्लड तो मिल गया था हमारी टीम आईजीएन को, और इनको टॉप लेन से अपने प्यारे प्यारे एरन द क्रिएटर की मृत्यु देखने को पड़ी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहले पे दहला लगा दिया भाई टीम एटर्नल ने। ट्रेड हो गया यहाँ पे, एक आपका एक हमारा, मृत्यु के बदले मृत्यु, ये वाला सीन हो गया। एक अच्छी बात चली, लेकिन अभी टर्टल का आगमन हो चुका है, तो टर्टल के आसपास ये टीम्स जाती हुई दिखेगी एक बार फिर। चलिए स्टन कनेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन जो हेड है उनके पास एचपी कमाल की रहती है, तो उनको इतनी जल्दी आप चलिए खत्म तो नहीं कर सकते हैं। आपके पास जबरदस्त ब्रस्ट डैमेज जरूर है, बट इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ तो जाते हुए दिखे मीरियो, वो कोशिश अच्छी की, लेकिन एयूजी का कमाल का इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ। कोशिश आपकी थी, अप्रोच आपका था, लेकिन किल निकाला है टीम एटर्नल ने। जाउजन वो किल निकालेंगे, साइलेंट किल निकालेंगे एरन द क्रिएटर का एक बार। अल्टीमेट कॉपीज ओके, लेकिन सही समय पे चलिए इनका भी एयूजी देखने को मिला था, पर इंतजार इनको भी करना पड़ेगा वो कोशिश। इसी के साथ देखते ही देखते एटर्नल टॉर्मेंट वो लेके जा चुके हैं 5 किल इस गेम के ऊपर। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी बढ़त जो है वो जमा ली है, विच आगे जाते हुए साइलेंट को घेरने की कोशिश थी, मीरियो भी आगे गए, लेकिन उनको घेरा गया। जोहेड की तरफ से एक कमाल का गेम प्ले देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कमाल का गेम प्ले देखने को मिल रहा है, एक डोमिनेशन देखने को मिल रही है यार। मुझे लगा था कि आईजीएन डोमिनेट करते हुए दिखाई दी, यहाँ से फिर से हाया को चेस कर रहे थे, आने अल्टीमेट मारी, बट इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बड़े प्यार से गोदी में उछाला और समाप्ति की ओर यहाँ पर लेकर गए। किल सिक्योर की जोजन की यहाँ पर थोड़ी सी बची है, टॉन्ट करना चाहते थे, पोनी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, तो इनको बताना पड़ेगा आपको बेला वीटा का परफ्यूम लगाना पड़ेगा, उससे बहुत बहुत जल्दी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे फैनी दीदी आकर्षित नहीं हुए। चलते हैं वापस गेम की तरफ भाई। पहला टर्टल यहाँ पर जा चुका है और 3 मिनट 44 सेकंड का समय हो चुका है। टोटल डोमिनेशन देखने को मिल रही है एटर्नल टॉर्मेंट की तरफ से। 7 किल ले चुके हैं, ऑलमोस्ट 4000 गोल्ड का डिफरेंस, नो 4000 3000 गोल्ड का डिफरेंस, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ एक और किल यहाँ पर मिल सकती है, जोजन की जान खतरे में फंसते हुए नजर जाएंगे। सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ अपना एओजी निकाला और जान बचा के भाग गए। पीछे जाके वो सांस लेंगे और थोड़ा सा एक गिलास पानी पिएंगे खुद को राहत देने के लिए। सरीना का स्टन लगा, पर उसका बेनिफिट नहीं होगा। प्यूरीफाई हमारी वैलेंटीना के पास बच के निकल जाएंगे। पीछे से गटो सॉरी जोहेड आए, गोदी में उछाला, डैमेज थोड़ा सा कम पड़ गया यार यहाँ पर, वरना किल सिक्योर कर जाते। हाया बुजाए शैडो का इस्तेमाल किया और फाइनली
अपनी टीम को एक किल दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। 60 सेकंड का समय बचा, यानी 1 मिनट के अंतराल के बाद हमारा जो दूसरा कछुआ है महाराज है वो अवतरित होंगे और उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर जंग प्रारंभ हो जाएगी एसएम भाई। आज बिल्कुल जंग का ऐलान होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस जंग के अंदर एटर्नल टॉर्मेंट्स, हम कहते हैं अंडर गॉड्स किस तरह की स्ट्रेटेजी लेके आता है वो कमाल का होता है। पूनी एक बार चले लेकिन केबल के साथ वो आए वो गए, जबरदस्त केबल्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ओबीएस को देखे तो इंतजार कर रहे हैं शायद अपनी टीम के लिए कि कब जो है उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स आते हुए दिखे या फिर कुछ विजन्स दिखे। मीरियो वो उनके आसपास जरूर है, उनकी और जंग हो सकती है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं अभी के लिए। तो चलिए लीथो का विजन जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं टीम आईजीएन, लेकिन पूनी आए तो कोशिश करेंगे बट इंतजार उनको भी करना पड़ेगा। विच जो है वो सही समय पे खेल रहे थे, लेकिन ये कमाल का है, टावर के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन बैठ नहीं रहा है तो वापस आ रहा है, वो भी एक सही स्ट्रेटेजी चल रही है। अब टर्टल आ चुका है मेरे दोस्त कहकर, टर्टल आ चुका है और इसी के साथ हमारी दोनों टीमें भी आ चुकी हैं। प्रॉपर घेराबंदी की जा रही है सो दैट कोई चुपके से टर्टल ना निकाल ले। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो हमारे जोहेड है फिर से यहाँ पर फ्लिकर का यूज करते हुए नजर आएंगे, शायद उसी का वेट किया जा रहा है। 12 सेकंड का कूलडाउन बचा और उसके बंदी 30 सेकंड का कूल डाउन बचा, तो शायद उसको टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट किया जाए कि हमारा फ्लिकर आ जाए और फिर से अंदर घुसे। बट ऐसा लग रहा है कि बदंग भैया कोई मंजूर नहीं था। यहाँ पर वैलेंटीना ने अल्टीमेट कॉपी की, अल्टी लगाई बट बेनिफिट नहीं मिला, पीछे हटना पड़ेगा। सलीने यहाँ पर स्टन मारना चाहती थी, वो भी यहाँ पर मिस करके पीछे से घटोत्कच की अल्टी आई, किल लेने में कामयाब हो जाएगी टीम आईजीएन। किल सिक्योर किया है, हमारे जो हेड थे उनको शांत किया जाएगा। मोचा विक्की भैया यहाँ पर एक किल लेने में कामयाब हो गए और विक्की को भी यहाँ पर मुझे लगा था मार देंगे, बट पीछे से फैनी आई, अच्छा खासा सपोर्ट किया, किल लिया, डबल किल ले चुकी है। और पॉइंट एचपी हमारे मोचा विक्की भैया भागते हुए नजर आएंगे और शायद रिकॉल करेंगे। रिकॉल कर लेना चाहिए था भाई और नहीं करना चाहिए था भाई, गलत बोल रहा हूं मैं, रिकॉल नहीं करना चाहिए था तुमको। आउटस्टैंडिंग गेम प्ले दिखाया भाई मोचा ने, मुझे तो लगा था कि ये बंदा यहां मर जाएगा, बट इसने जो स्किल स्पैम की, पीछे से फैनी का सपोर्ट मिला और आउटस्टैंडिंग डैमेज वहां पर मिला बेचारे को। जोजन यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहा है, उल्टे पांव यहाँ पर की अल्टी मारा, गोदी में उठाला, उछाल दिया, किल सिक्योर की। बदंग यानी मीरियो यहाँ पर आए थे, बचाना चाहते थे अपने साथी मित्र को, समय रहता है उनको भी समझ आ गया कि अगर मैं अंदर गया तो वापसी की जो संभावनाएं हैं वो नहीं बचेंगी, इसीलिए शायद वो पीछे हटना समझ गया और वापस बताइए भाई ये टर्रेट दे दीजिए। अगर आप इस टर्रेट के पीछे पड़ेंगे तो मृत्यु कन्फर्म है आपकी, ये लिख के ले लीजिए। और शायद ये उन्हें समझ आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा पीछे रहकर खेलेंगे। फैनी यहाँ पर फिर से थोड़ा सा अग्रेसिव खेलती हुई नजर आ रही है। अगर फैनी की बात करें यार एसएम भाई तो आउटस्टैंडिंग खेल रहा है बंदा, 4-0-3 का स्कोर चल रहा है एंड जब भी आता है किल लेके जाता है, दोनों बफ लेता है, आता है किल लेता है फिर चला जाता है। घटोत्कच चाहे अल्टी मारेंगे, खुली हवा में सांस लेने गए थे और खुली हवा में उन्होंने अल्टी मार दी, जिसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेलिना का स्टन तो है बट डैमेज सफिशिएंट नहीं है। पीछे से एरन द क्रिएटर है, टारगेट करना चाहते थे, घटोत्कच ने गोदी में उछाल के पीछे फेंक दिया है। वैलेंटीना ने अल्टी कॉमेडी कॉपी की है, घटोकी पर यूज करते हुए नजर नहीं आएंगी। दोनों टीम सावधानी के साथ पीछे हट जाएंगे। हायाबुसा यहाँ पर आए, अल्टी मारा है, बट टीम हमारे इटर्नल लेजेंड से उनको पता है कि हाया का एक एक काउंटर, सारे एक दूसरे से चिपक के खड़े हो जाओ, बेचारा को कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पे हुई, जो मैच है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ, दोबारा एक और हाया तो कुछ नहीं कर पाया भाई। फैनी भाई दोबारा अंदर आए, बफ अपना लिया, उसके बाद हायाबुसा को लिया, चुपचाप वापस से साइड लेन में चले जाएंगे। ये हमारे वो फिल्म के हीरो हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा झगड़ते नहीं है, सिर्फ मारने पे भरोसा रखते हैं और ये मार लगातार हावी होती जा रही है। फिर से यहाँ पर चेस किया जाएगा, पकड़ने की कोशिश की जाएगी। हमारे जोहर ने गोदी में उछाला तो था और इसी के साथ मृत्यु भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। घटोत्कचा भैया की जोजन जो उनका मेन हीरो है घटोत्कचा, उतना प्रभावशाली खेल नहीं पा रहे हैं भाई। और तीसरा टर्टल ही हमारी जो टीम एटर्नल टॉर्मेंट थी उसने सिक्योर कर ली है। एरन द क्रिएटर को यहां पर फंसा लिया है, परफेक्ट अल्टीमेट देखने को मिला मैं साइलेंट की तरफ से। जोहर यहां चेस करते हुए नजर आ सकते हैं बट पीछे हटेंगे। बदंग यहां पर आए, बॉल का इस्तेमाल किया, फिर क्रैक लगाएंगे और क्या क्रैक कर पाएंगे, नहीं वो नहीं क्रैक करेंगे, बट उनको यहां पर डेफिनेटली जो हमारी टीम एटर्नल है वो क्रैक करते हुए दिखाई देगी। 97 सेकंड, उसके बाद शिव शंभू का अवतरण। क्या ये मैच शिव शंभू के साथ खत्म होगा या फिर हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है? चेज करते हुए नजर आएंगे, साइलेंट यहाँ पर फाइनली फंस सकते हैं, भागने की पूरी कोशिश की जाएगी और फाइनली साइलेंट को साइलेंट कर दिया गया है। टीम पीछे हटेगी, एटर्नल टूर्नामेंट थोड़ा सा वेट करेगी, फार्म अप करेगी और रिकॉल करके एचपी भर के वापस आएगी। तब तक चलते हैं एसएम भाई के पास। में कह रहा था क्या फर्स्ट लॉर्ड के साथ मैच को समाप्त किया जा सकता है? अगेन खाली जगह पे अल्टी मार दे भैया, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा तो। चलिए ग्रेंजर वो खेल निकालते हुए भी दिखे, दूसरा चलिए खाता उन्होंने खुला, लेकिन पोनी वो कमाल का खेल रहे हैं आज, स्पाइडरमैन की तरह आ रहे हैं, खेल निकाल रहे हैं फिर जा रहे हैं। एंड अभी समय हो चुका है 10 मिनट के आसपास का, तो
कोर बिल्ड जो है वो तैयार होते हुए दिख रही है। सभी हीरो के पास कोर बिल्ड आ जाएगी, यानी कि 3-3 आइटम्स जो है वो तैयार होते हुए दिख जाएंगे। एंड फैनी के ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी तरफ देखें तो रिस्पेक्ट एंड पूनी, उन दोनों के बीच का गोल्ड का अंतर देखें तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड डिफरेंस के अंदर भी कहीं ना कहीं 6000 के आसपास का फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। ये फर्क 2 आइटमाइजेशन के बराबर होता है उसका। जुको के उसके साथ मॉन्स्टर किल निकालते हुए पूनी, यहाँ पे जोजिन तैयार थे उनके बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाएंगे अराउंड द क्रिएटर। वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं टीम के लिए जो किल उनको चाहिए। दूसरी तरफ पुनी वो आ रहे हैं, किल्स निकाल रहे हैं, वो जा रहे हैं। स्काईपियर्स उनके पास जरूर तैनात था लेकिन स्टैक्स 0। दूसरी तरफ पुनी 6 निकाल चुके हैं। डेथ का सामना उनको करना पड़ा नहीं है, मतलब रिसेंटली लिया है उन्होंने स्काईपियर्स, तो 1 किल सिक्योर करने के बाद 10 स्टैक्स जरूर हो चुका है। बट अगर थोड़ा जल्दी आता तो फिर दिक्कतें ज्यादा करता है। अब तक अगर वो मरते नहीं है तो फिर ज्यादा दिक्कतें और भी करेगा। और उसके साथ लॉर्ड चलिए सिक्योर हो चुका है, यानी कि लॉर्ड अवतरित होते हुए दिखेंगे। एंड सभी लेन में सेम सिचुएशन चल रही है, तो मिड लेन से आएंगे क्या दोस्त? टॉप लेन से आएंगे। टॉप लेन पे कम टर्रेट्स हैं और शायद मुझे लगता है कि मिड लेन का और जो बॉट लेन का टर्रेट है ना, ये भी यहाँ पर जाने वाला है। तो सिर्फ बचेगा इनके पास इनविटर टर्रेट्स और उसकी होली शील्ड। तो शायद टॉप लेन में वो भी ना बचे, क्या पता। जैसे हमें कल देखा था कि एक छोटी सी गलती ने पूरा मैच बदल के रख दिया था और लॉर्ड का एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उस लॉर्ड के साथ पूरा मैच समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर वो चीज हो सकती है, अगर यहाँ पर आईजीएन थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने की कोशिश करती है, 2 से 3 लोग अगर मारे जाते तो यहाँ पर जो हमारी इटर्नल टॉर्मेंट है वो मैच को खत्म करने की, समाप्त करने की क्षमता रखती है। फैनी की बात करेंगे यानी पुनी की बात करेंगे तो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं बॉट लेन से मिनियन प्रेशर बनाने की, और इसी के साथ वॉल में फंसते हुए नजर आएंगे। जान बचा के भागने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाय बुजा वहां आना चाहते थे, शैडो का इस्तेमाल करना चाहते थे, बट भैया वहां पर मिस कर गए। अपना जो मार्कर था वो कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अल्टी मारने में असक्षम रह गए। इसी के साथ टॉप लेन से जो लॉर्ड है कंटिन्यूसली मार्च करते हुए आएगा। होली शील्ड जा चुकी है और टीम एटर्नल यहाँ पर बड़े प्यार से लॉर्ड को अकेले छोड़ दिया, कहता तुम अपने हाल पे जियो, हमें अपने हाल पे रहने दो। और इसी का हाल का नतीजा यहाँ पर हमें बॉट लेन में देखने को मिल रहा है। मिड का भी टर्रेट जा चुका है, बॉट का भी टर्रेट जा चुका है, मिड का जो शील्ड था वो भी जा चुकी है, बॉट की शील्ड भी जा चुकी है। सो अब बचे हैं सिर्फ इनहिबिटर टर्रेट्स, और जो नेक्स्ट लॉर्ड आएगा 98 सेकंड्स के बाद, वो यहाँ पर एक विशाल काय होगा, बहुत ज्यादा और डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। तो जैसा आप कह रहे थे, एरन द क्रिएटर यहाँ पर पूनी द डिस्ट्रॉयर बन के घूम रहे हैं, जिसके पास जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और ये यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है उन्होंने और टीम आईजीएन के लिए। आईजीएन मुझे नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों ग्रेंजर मतलब हैरत क्यों पिक किया है। इन्होंने पहले शो किया था कि मॉस्को के साथ जाना चाहते हैं। अगर मॉस्को यहाँ पर होता तो मॉस्को डेफिनेटली बहुत बहुत बेटर पिक होता है एज कम्पेयर टू हैरत इन फ्रंट ऑफ फैनी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? फर्क तो पड़ता बिल्कुल, क्योंकि उनका जो स्टन है हम देखते हैं कि उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता उनको, तो फायदा तो जरूर होता। लेकिन अभी भी हो सकता है कि ये जो मुकाबला है ना वो लंबा चलने वाला है। बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है, तो इंतजार शायद से कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परख रहे हैं टीम्स को कि किस तरह का वो खेल रहे हैं। इससे पहले शायद स्ट्रेटेजी ना बनाई, अगर बनाते तो थोड़ा फर्क पड़ सकता था। लेकिन अभी चलिए इंतजार और भी रहेगा, इनके पास मौका है, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल है। वो कहते हैं कि एक गलती और मैच पलटी, यहाँ पे मैच कब पलट जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। लॉर्ड का इंतजार रहेगा, अब लॉर्ड आएंगे तब उसके आसपास फाइट होती हुई दिखेगी। स्प्लिट पुश की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि लॉर्ड के इर्द गिर्द उनकी टीम होगी, तब तक जो एक टावर निकालने के लिए जाया जाए। फिर ये आगे जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं वहां पे, लेकिन पूनी तैनात है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आगे गए, पूनी के चंगुल में हैरित फंस गए तो दिक्कतें हो सकती है, उनको पता है। चलिए कहकर और दोस्त लॉर्ड जो है वो अवतरित हो रहे हैं, और इन्हीं के अवतरण के साथ मुझे लगता है एक धुआंधार हमें धमाकेदार सामूहिक युद्ध देखने को मिल सकता है। दोनों टीम से यहाँ पर तैनात है। बट बात करें एटर्नल टॉर्मेंट की, तो उनके पास थोड़ा सा अपर एंड है, उनका फार्म थोड़ा ज्यादा है, उनके गेयर थोड़े से ज्यादा कंप्लीटेड है। और जो गोल्ड डिफरेंस है ना यार, ऑलमोस्ट 8000 गोल्ड का हो चुका है। तो उसमें बड़े प्यार से आप 2 आइटम्स खरीद सकते हैं। तो इतना बड़ा गोल्ड डिफरेंस कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करने वाला है टीम आईजीएन के लिए। उनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा मौके पे
टोका लगाने का। आप अभी आईपीएल के मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अगर आपने थोड़े से भी दिक्कत क्रिएट की तो प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जो टीम मुंबई इंडियंस है वो बड़े प्यार से ट्रॉफी लेके चली जाएगी। तो अगर आप गुजरात टाइटंस से तो आप ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी के साथ हमारे जो लॉर्ड है यानी शिव शंभू, उनकी आरती अर्चना स्टार्ट कर दी है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है एटर्नल टॉर्मेंट की तरफ से। क्या वे करने में कामयाब हो पाएंगे? मुझे लगता है कि बड़े प्यार से आईजीएन थोड़ा सा यहाँ पर घबराती हुई नजर आ रही है। मीरू यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, फ्लिकर अल्टीमेट लगाने की कोशिश की जा सकती है, बट सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती है अगर जो हमारी वैलेंटीना है उसने अल्टी कॉपी कर रखी है और जोजन की, अगर जोजन की अल्टी यहाँ पर परफेक्टली टाइमली लगती है फ्रॉम वैलेंटीना, मतलब समझ रहे हो ना यार, अगर वैलेंटीना गटो की अल्टी मार देती है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैं बहुत ज्यादा लंबा कर रहा था, जैसे मैथ्स की थ्योरम होती है। तो इन शॉर्ट अगर वैलेंटीना ने अल्टी कॉपी कर रखी है, टाइमली लगाती है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, दिक्कतें आएंगी। और इसी के साथ लॉर्ड यहाँ पर निकालिए, किल की कोशिश की जा रही है। हायाबुसा अंदर गए थे, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया था बट मिस कर जाएंगे। और इसी की तरह साइलेंट भैया भी यहाँ पर साइलेंट ही रह गए। टैनी ने चेज किया, हाया को समाप्त किया, गॉडलाइक के साथ उनका बफ निकालेंगी और वापस से चुपचाप साइड लेन में जाके मिनियंस क्लियर करने लग जाएंगे। तो देखिए 5-17 का जो स्कोर है वो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है। पिछले लॉर्ड के साथ आपके 3 टर्रेट्स गए थे, और मुझे लगता है कि इस लॉर्ड के साथ आपके 3 टर्रेट्स और आपका जो क्रिस्टल है वो भी चला जाएगा। क्या ऐसा होगा एसएम भाई? हो तो सकता है, लेकिन अभी डिफेंस कितना कर पाते हैं वो देखते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखिए बात ही कर रहे थे कि पुनी, अब इनको आप सिक्योर नहीं कर पाते हैं, इनका किल जो है वो सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कतों का सामना डेफिनेटली आपको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि फोवियस जो मोचा खेल रहे हैं, और किस तरह से अपने आप पे कॉन्फिडेंट लेके खेल रहे हैं। उनका एचपी हमने देखा कि 1 एचपी के आसपास था, फिर भी वो तैनात थे, लड़ते हुए दिख रहे थे। चलिए लॉर्ड आगे बढ़ रहे हैं। एक या आईजीएन पहला अंक गवाती हुई दिखेगी यहाँ पे। टीम एटर्नल टॉर्मेंट वो तैयार है युद्ध के लिए, योद्धा रेडी हो चुके हैं, एक बैटल चलिए बिल्कुल सच चुका है। एंड दूसरी तरफ देखें यहाँ पे लॉर्ड मार्च करते हुए, एक टावर टूटा है, क्रिस्टल ओपन हो चुका है, मिड लेन का टावर भी यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा और लॉर्ड डिफेंस होता हुआ दिख रहा है। चलिए डिस्ट्रॉय जरूर किया है, पूनी का इंतजार है, पूनी आएंगे एंड कौन सा किल इस बार उनके चंगुल में फंसने वाला है, तो क्रिएटर के आसपास जाते हुए दिखेंगे, बट इंतजार करना पड़ेगा। एओजी का इस्तेमाल होगा, IMU वाला एओजी यहाँ पे आएगा जरूर, बट उसको भी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कमाल का काम कर दिया है यहाँ पे अपनी टीम के लिए, और ये देखे पूरी टीम के बीच में जाए, वहां से खदेड़ के आए हैं, और थोड़ा सा इंतजार करने के लिए वो पीछे हट चुके थे। उनको पता है कि उनकी स्किल्स जो है वो यूज हो चुके हैं, हथियार जो है वो ढल चुके हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें जब तक आपके हथियार वापस आ जाते हैं, तब तक हटे यहाँ से। जिस चीज की आवश्यकता थी उन्होंने निकाल लिया है। अब टीम आईजीएन जो है वो लड़ती हुई दिखेगी अपने क्रिस्टल के ऊपर, उनका गढ़, उनका किला जो है वो बचा हुआ है। अब यहां से 2 या 3 प्लेयर गवाते हैं, मिनियंस वेव साथ रही टीम एटर्नल की, तो गेम खत्म। एक बार फिर चले, बस इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चूक हुआ है, टीम साथ में थी, विविच और बाल बाल बचे हैं एंड पूनी और लेजेंडरी कंप्लीट करते करते इंतजार और देखने को मिलेगा। लेकिन जाउजेन को यहाँ पे घेरने की पूरी कोशिश चल रही है, बट वो भी चलिए अपनी टीम के लिए विजन देने गए थे, खुद को रिकॉल करेंगे एंड उसके बाद बैटलफील्ड में आते हुए दिखेंगे थोड़ी ही देर में। अब 32 सेकंड्स का समय, यानी कि आधे मिनट के बाद लॉर्ड एक बार फिर अवतरित होने वाले हैं कहकर। और दोस्त लॉर्ड के इर्द गिर्द जो है ना, ये वापस से टीम फाइट होती हुई दिखेगी, तब तक करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। और मुझे लगता है जो टीम आईजीएन है अभी उनकी पूरी कोशिश रहेगी एडी चोटी का जोर लगा देंगे कि किसी तरीके से ना लॉर्ड स्टील हो जाए, क्योंकि अगर ये वाला लॉर्ड वो स्टील करने में कामयाब हो गए तो वो टर्रेट्स भी निकालने में सक्षम हो जाएंगे, और साथ के साथ उन्हें थोड़ा सा और समय मिल जाएगा अपने गियर्स को कंप्लीट करने का, सो दैट जो फार्म डिफरेंस है वो मायने ना रखे। बट टीम जो एटर्नल टॉर्मेंट है उन्होंने शिव शंभू का जो आरती अर्चना थी स्टार्ट कर दी है, जितनी जल्दी हो सके उनका आशीर्वाद यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी। आईजीएन की जो टीम है मीरो यहाँ पर थोड़ा सा आए थे और फेर बदल करते हुए नजर आएंगे, और टीम टॉर्मेंट पीछे हट चुकी है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे। भाई आप बहुत बहुत ज्यादा फार्म्ड है, ऑलमोस्ट 9000 का गोल डिफरेंस है, तो उसका तो दबदबा थोड़ा सा दिखना चाहिए था। आपके पास कुछ, आपके पास टर्रेट्स है, आपके पास किल्स है, आपके पास गोल्ड है, इतनी आसानी से अगर आप पीछे हट गए तो इससे पता लगता है कि डर तो है। और ये डर अच्छा लगा मुझे देख के कि एटलीस्ट एक्सपीरियंस टीम का डर होना बहुत जरूरी होता है। बट मोचा विकी भैया बड़े प्यार से कहते हैं ना, पतली गली से बच रहे सलीना के स्टन से, अगर थोड़ा सा इधर होते तो उनको स्टन लगता और साथ में ही वहां पर युद्ध प्रारंभ हो जाता। मुझे नहीं लगता कि अभी हम कहीं जाने वाले हैं,
दोनों टीम्स यहाँ पर लॉर्ड को लेने की कोशिश करेंगी, पीछे हटेंगी, लॉर्ड रीसेट होगा, फिर कोशिश करेंगे, फिर पीछे हटेंगे, लॉर्ड रीसेट होगा, और अगले 2 से 3 मिनट यही चलने वाला है। बट यहाँ पर मिनियंस मजबूर करने वाले हैं, हायाबुसा को बॉट लेन पे जाके मिनियन क्लियर करना पड़ेगा, और शायद इस चीज का फायदा होता कि टीम जो इटर्नल है वो लॉर्ड यहाँ पर ले सकती है, कोशिश कर सकती है। उनका जंगलर यहाँ पर नहीं है, तो रेटरी मारने के लिए कोई नहीं है। फैनी यहाँ पर अंदर घुसते हुए नजर आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। फैनी ज्यादा अग्रेसिव नहीं खेलने, अभी पहले गेम में थे, अब थोड़ा सेफ है। बदंग यहाँ पर एप्लीकर अल्टीमेट है, पीछे साइलेंट का यहाँ पर अल्टी है, जोजर ने अल्टी मारी थी, परफेक्ट अल्टीमेट के कॉम्बोज है, किल सिक्योर कर लिए। फैनी को यहाँ पर धराशायी की जाएगा, जो ग्रेंजर थे वो यहाँ पर लॉर्ड को निकालने में कामयाब है, बट ज्यादा देर तक नहीं। और इसी के साथ फिर से फंसते हुए नजर आएंगे, पीछे हटना पड़ेगा। जो हमारे जॉहेड थे, मुझे ही समझ आया कि वहां क्या कर रहे थे, बट उनकी गलती की वजह से बेचारा पीछे जो ग्रेंजर खड़ा था ना, वो डेफिनेटली मर जाता, क्योंकि हमारे जो बदंग भैया तो पकड़ने जॉहेड को गए थे, ग्रेंजर को फ्री में अल्टीमेट लग गई। यहाँ लेकिन पर अभी तक लॉर्ड मिल गया। सम भाई, क्या मैच खत्म होगा? देखिए चांस तो वैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि मिनियंस वेव ही इतनी परेशान करती हुई दिख रही है, बट आपके पास पूनी जो है वो नहीं है, एंड वो वहां पे अच्छा सिक्योर कर लिया। चलिए अभी समय हो चुका है लॉर्ड के अवतरण का, तो वही चाहेंगे जो मिड लेन आएगी, मिड लेन से जो वेव आएगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वो हो सके तो चाहेंगे कि आगे भेजा ना जाए, तब तक यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे उनको जरूरत है मोचा की, अगर वो है नहीं तो उनका जो फाइट है वो इनिशिएट करने वाला बंदा यहाँ पे था नहीं कोई, तो इंतजार करना पड़ गया। और फाइट इनिशिएट करने के लिए मोचा यहाँ पे जरूरी था, तो उनकी गैर मौजूदगी थोड़ा सा इंतजार और करवाएगी। तो उसी चक्कर में चलिए थोड़ा सा इंतजार और देखने को मिलेगा, एंड ये गेम ज्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर किस मोड पे जा सकता है, फिर वापस उसी तरह जो पे आ जाएगा। अभी तक देखें तो सीधा दिख रहा है कि इटर्नल टॉर्मेंट के हाथ में ये गेम है, वो बस एक हिट दूर है इस गेम से, बट वो कहते हैं कि एक गलती और मैच पलटी। अब सिचुएशन उस तरह की आ चुकी है, क्योंकि अगला लॉर्ड आप गवा देते हैं तो फिर आपके पास 2 टावर्स बचे हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि आपके पास टावर्स की भरपूर मात्रा होती है तो आप जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, बट आप देखें कि समय भी तो उतना हो चुका है। जब आप डाउन हो जाते हैं तो फिर कूल डाउन लंबा लगेगा, उस लंबे कूल डाउन के चक्कर में गेम भी जा सकता है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, और 43 सेकंड का समय हो चुका है। मिनियन का प्रेशर यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है टीम हमारे आईजीएन के लिए, क्योंकि उनको लॉर्ड के साथ साथ मिनियन के प्रेशर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मिनियन का प्रेशर ज्यादा हुआ तो आपको पहले मिनियंस को रोकने पड़ेंगे, और उसी समय में लॉर्ड यहाँ पर जो टीम एटर्नल है वो लेने में कामयाब हो जाएगी। शायद इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए फैनी दीदी कंटिन्यूसली साइड लेनी करते हुए नजर आ रही है, मिनियंस को क्लियर करते नजर आ रही है, सो दैट जो प्रेशर है, जो दबाव है वो बना रहे, टीम आईजीएन पे ज्यादा अग्रेसिव खेलते हुए ना नजर आए। दोबारा हमारे हायाबुसा बॉट लेन में जाएंगे, मिनियन को क्लियर करेंगे, तो इसी के साथ जो 10 सेकंड के अंदर लॉर्ड आएंगे ना, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, कौन सी टीम उन्हें सिक्योर करती है, उनका आशीर्वाद किस टीम को मिलता है। कोशिश की जाएगी टीम एटर्नल की तरफ से कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के ले लिया जाए। बट आईजीएन जो ऑलरेडी पिछला लॉर्ड बड़े प्यार से डिफेंड कर चुकी थी, क्योंकि वो एक किल लेने में कामयाब हो गए, तो शायद इस बार से उनकी दोबारा कोशिश यही रहे कि किसी तरीके से अगर आप लॉर्ड नहीं ले सकते ना, तो एटलीस्ट 1 से 2 किल ले लो, इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इससे जो आपकी टीम है वो बड़े प्यार से हैंडल कर लेती है चीजों को। जी बिल्कुल, और उसी आसपास अब जाने की कोशिश करेंगे। उनका इंतजार, उनकी जो निगाह है, उनकी जो नजर है उसी के ऊपर रहनी चाहिए कि अगर लॉट छूट गया तो फिर यार उन्हीं को निकाल लें, और एक ऐसा निकाल ले जो फाइट इनिशिएट करता है। एंड चलिए शुरुआत अच्छी हो चुकी है, रिस्पेक्ट, वो अपनी टीम को रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, सही समय पे ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे निगाह पुनी के ऊपर भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास केबल की ताकत से कब आपके बेस के अंदर आ जाएंगे एंड बेस उड़ा देंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसको भली भांति भापा है यहाँ पे मीरियो ने, तो गए हैं यहाँ पे लेन क्लियर करने के लिए। समय काफी हो चुका है, 22 मिनट का समय 23 मिनट के आसपास होने वाला है, तो यानी कि लॉर्ड जो है वो इवोल्ड हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले वाले लॉर्ड इवोल्ड हो चुके थे, बट इंतजार वहां पे और करना पड़ा, क्योंकि तब फाइट इनिशिएट करने के लिए आपके टीम का जो मेंबर था वो था नहीं। एंड टीम आईजीएन वो लॉर्ड के इर्द गिर्द, वो लॉर्ड को सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइट इनिशिएट होती हुई दिखेगी, क्योंकि लॉर्ड की एचपी जो है वो काफी कम होती हुई दिख रही है। जॉयड है नहीं तो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे एओजी का इस्तेमाल देखने को मिला है। पूनी यहाँ है, अगर पूनी यहाँ पे ले गए तो दिक्कतें होगी। रेटरी यूज हो चुका है, इसी के साथ रिस्पेक्ट जो है वो अपने स्किल से क्योर करेंगे, लॉर्ड को अपनी टीम में लेने के लिए कामयाबी हासिल कर लेंगे। टीम आईजीएन चमत्कार को करवाते हुए नमस्कार। दिक्कतों में फंसती हुई टीम इटर्नल टॉर्मेंट, डबल किल अराउंड द क्रिएटर, ट्रिपल किल विद द हैरेट, और उसी के साथ अब आपकी टीम में योद्धा जो बचे हैं वो है जोहेड।
अब जो मिनियन वेव है उसको आने में 4 सेकेंड्स का समय है, यानी कि लॉर्ड जो, चलिए लॉर्ड का आने का समय अब हो चुका है, लॉर्ड अवतरित हो चुका है। जब तक लॉर्ड पहुंचेंगे तब तक कितने हीरो आपके आएंगे वो भी देखना रहेगा, क्योंकि अब टीम आईजीएन चाहेगी फटाफट मिनियन वेव को क्लियर किया जाए, लॉर्ड के साथ गेम अंत की तरफ लिया जाए दोस्त। तब नहीं हुआ यार। लॉर्ड लॉर्ड चलिए आगे जाता हुआ दिख रहा है, टीम आईजीएन भी पहुंच चुकी है। इटर्नल टॉर्मेंट शुरुआत अच्छी थी बट ये गेम चलिए अंत हो चुका है। वो अक्सर कहते हैं कि एक गलती और मैच पलटी, वो दिखता हुआ एक्सपीरियंस भली भांति झलकता हुआ। टीम आईजीएन दबे हुए जरूर दिख रहे थे, लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ा है वो अंत की तरफ लेके गए और ये गेम उन्होंने अपने नाम कर लिया है। शुरुआती गेम में काफी बिछड़े थे, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पर अंत चलिए उनके पल्ले में जाता हुआ दिखा है। बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है तो इंतजार और करना पड़ेगा हमको फाइनल चैंपियन देखने के लिए, लेकिन टीम आईजीएन ने वो अपना कमबैक दिखा दिया है। काफी कमाल का गेम प्ले पुनी की तरफ से जबरदस्त खेल रहे थे वो, लेकिन वो फाइनल हिट जो उन्होंने विजय रथ का आगाज किया था वो पहुंचा नहीं पाए। उनकी जो विजय थी वो पहुंच नहीं पाई एक मकसद तक, एक अपनी मंजिल तक। एंड टीम आईजीएन एक जबरदस्त कमबैक। जानते हैं हमारे दोस्त से कि क्या लग रहा है कि उनको क्या कुछ हो गया यहाँ पे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओके चलिए, शायद वो कुछ समस्याओं का सामना करते हुए दिख रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबले में एक अंक जो है वो टीम आईजीएन ने ले लिया है। अब थोड़े ही समय में जो है हम लौटेंगे दूसरे मैच की तरफ, तब तक अब बने रहिए। देखते हैं कि टीम इटर्नल टॉर्मेंट जो है, जो गलती इस मैच के अंदर हो गई, वो लॉर्ड के वहां पे दिक्कतें हो गई उनको, वो अगले मैच में ना दोहराए उसमें कमबैक करते हुए दिखेंगे, या फिर टीम आईजीएन जो है उनको जो एक आगाज चाहिए था वो मिल गया है उसको बरकरार रखते हुए दिखेंगे। तो पता चलेगा थोड़े ही समय में। तब तक लौटते हैं एक छोटे से 2 मिनट के ब्रेक के बाद। Alpha, my dear doomed king. The time has come to cast away that frail mortal shell. Join me in eternity.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to the Premium Arena that is powered by Premium Cup Esports, that is P Cup Esports. We are here into the grand finale right now. Cast a single match in this tournament, but right now I got, call from Jay Brai, even my co-caster. I will obviously, I mean, uh, tell her name. Don't worry about it, guys. But before that, doing my first casting here, but the match is too OP. I mean, IGN versus Eternal Torment. IGN, we all know about them. They are the best team, the OG team, the best team. And fun fact, uh, okay, let me first introduce my co-caster. Myself, Ash TZ. It's your boy Ash TZ, guys, in the casting deck. And with me, my co-caster, my friend, Zivo, is with me right now. Zivo, it's the luck or what? We always get the IGN match. Might be fate, the red string of fate that ties us together, kind of like that. But yeah, getting IGN is always interesting because we get to see a lot of different gameplays somewhat, because last match as well, the first match, it was Team Eternal Torment, dominating and Yeah, tormenting IGN, but around the late phase it just went all backfired onto them, and IGN made a huge yeah. comeback. So it's always interesting to watch IGN play with any other teams. Obviously, you're totally correct about it. And I mean, there is a god over there, Aaron the Creator. I would call him Aaron the God. And look at the gameplay in the last match of him. It was totally, he just outplayed the whole Eternal Torment at that moment. But kudos to Eternal Torment for giving a beautiful fight to IGN. I mean, they were dominating the whole game, as you said. They were tormenting the whole game from the beginning. It's okay. I mean, sometimes you cannot stand in the late game. Totally okay about it. But Puni, jungler, ex LTF member, ex jungler of ABM, two big scores, two big names, and he had played for those two big names. But right now, having his own squad, Eternal Torment, playing for them, making that squad to be known in the whole Indian scenario, it's a very nice thing. But right now, I will talk a little bit of for IGN as well. I mean, OG squad, some OG members are from that squad, so I7 and all. I mean, hats off to those people, those legends of our Indian community tournaments. Even, those days the esports scenario was not so big, but those guys literally got their name into at that time. So, I mean, can you just believe if those guys would be here today, how it could be? I mean, it would be like big thing for me if I would have sharing the stage with them, but it's okay. They're not here. They already take their retirement. But these guys are following the paths of those legends right now of India, and they are in the finals again, and we are casting in the finals, guys. So, are you guys excited or not? Because the first match goes into the hand of IGN. So, what are you guys thinking? Will it be a BO5, full BO5 set, or will it be going to end in a 3 set? I mean, 3-0 from the IGN side, because we have seen that already in the lower bracket final. I haven't casted for the tournament, but I've seen the tournament. I was watching at how the upper bracket finals went for IGN, how the lower bracket finals went for Eternal Torment. It was nice. Right now, we're here into the finals. Devo, what do you think? What will happen? Before asking the audience, I want to ask my co-caster, my friend Devo. Devo, 3-0 or a total fight back coming out from the Eternal Torment? Might be a 4-1. I'm kind of leaning towards a 3-1, not 4-1, 3-1 actually, from the side of IGN. But the thing is, there's always an element of surprise, right? You never know when your luck would favor you, and you might Mm, just take the game. So mm, yeah, kind of excited for both the teams. May the best team win here. But mm, yeah, as back onto the draft, right? So we do see a Matilda and a chip band coming in. Although IGN does not go for any chip pick, Yep. Yep. I've not seen any of the members play chip, Mirio, Yeah. or even Zozen right there. So I feel like that was kind of a wasted slot around the ban, Yeah. because it's gonna be crucial for you to ban the heroes that your opponents picks, right? But still, Kalea is quite a good ban. Obviously, Zozen is using the Kalea, but I'm also surprised to see that chip because there is no art.
there is no apex in the opponent side. You shouldn't go for that chip then, but it's okay. It's totally okay. Maybe they're thinking something. Maybe they're thinking that they will be picking the Granger, Irithel onto the side of Aaron, and with a chip. Zozen is a Zozen having a great hero pool. He knows how to play chip. But don't play it, and I mean, not in the tournament scenario, but he knows that. Maybe that's the reason they just take it out. Right now, Chips is a great tank. I mean, not just a great tank. He just usually he and the witch is also there, so witch can go for the Louis. So it will be, I mean, a pain in where So therefore, they just maybe went for that thing, and right now we can see the Fanning get banned. Obviously, I mean, it was needed. Previous match, we just saw that Pooney was literally disturbing the whole IGN score with the Fanny. He was literally hindering all those IGN members from the start to the end of the game, but it was that and the creators getting the damage in the late game, and what a retreat from the respect point. I mean, obviously, his retreat is too good, and he just showed in the Lord fight just with the way he took the Lord, and then the whole squad went for the end and just got the crystal in the first set. Let's not talk about it. Right now we have the second set, so let's see what was the third ban from the side of team Eternal Torment. They're going with the Eternal Hero, that is the Phobius, will be the banning phase right now, will be locked down. Not locked down, I can say will be taken down from the draft right now with the Lucas side of Team IGN. They're answering with a Lucas against that Phobius ban. That's a nice thing to see. But right now, we are gonna see what the ban coming from the side of team. I mean, what the picks coming out from the side of Eternal Torment. There are a lot of heroes open already. Granger is open. We have seen how the Granger was walking great from the side of Team Eternal Torment. What do you think, Vivo? Will they go with the Granger? Oh, I mean, taking the Granger away from Aaron, kind of good idea, but he still has the Herod in his hands, so kind of give and take situation because I don't think you should be taking both of them together because they're quite in the goal laner side. But yeah, respect will be stripped off of that. Suyo Puni will be taking that one as a kind of a revenge because Fanny was banned out from the side of IGN. So if you ban out my Fanny, I'm gonna take your hero. Would be the Suyo in his hands, and yeah, okay, Zozen on to Hylos this time. His one of his, I would say, signature favorite picks coming in from his side. Obviously. He plays the Hylos quite well, and which of Yeah. course, leaving the Zushin open, he has to pick it out. You know what, Zivo? Previously, Kimmy was the roamer of IG, and he just do Hmm. great with the high lots as well. And now Zozen being the roamer, being the leader of the IGN, being the IGL, we can say, in-game leader. He is also great in his high loss pick. But right now we can see, I mean, talking about Kimmy, right now we can see from the start of Team Eternal Torment, but Toski is the favorite child. Okay, that's nice to hear. We'll be going with Kimmy's ace pick. That is a Gatot Kacha, and Harris will be locked down from Aura Farmer Nezik from the side of Eternal Torment right now. Let's see what will be the answer. The answer will be totally fine from the side of Team IGN. The God, the creator, Aaron, will be going with the Granger, the S, his S pick. He will be picking it up right now, and they will be going with the Sicilian ban. A right to point ban. You got the Jushin, just ban the another meta, Sicilian. Yep, definitely pick and ban the meta heroes. Either pick or ban the meta heroes is what we are seeing coming in from the side of both the teams right now. And okay, quite late on that Badang, but still there was a possibility of Hylos going in the EXP. Staying with Badang on the EXP, so I guess better safe than sorry situation coming in from the side. And one more mage ban coming in. The Farsa just ban out the two of the most high range heroes, high range mages from the side of IGN. And okay, Herit and Granger, take one, give one for both the teams. But the question is, will Herit do better against a Granger? Because in the books, he does do great, but it is in the hands of Aaron right now, and he plays Granger like none other. So that is one question in their hands, but still we can't underestimate the side of Aura Farmer right here. But the question is,
will he be getting his aura in the negative, or will he be farming his aura is the question. But yeah, one more jungler, Joy, getting banned out from their side, and it would be maybe an Hayabusa coming in from Respect. What do you think? Obviously, I mean that's left right now. He can go with the Nolan as well. I mean, if they're cooking for a Louis or for a Eve, the mage, the backline will be disturbed from that Mhm. Nolan pick, so they can go with that as well. And as you said, that Granger had a thing. Obviously, Granger is a natural counter of Harith. We all know that. And look at that, the Granger being picked up by his best man in the India right now with the Granger. Up to Stack TV, obviously. Both of them are great. But Stack TZ right now owning that place after winning against the IQ. I'll not say it. I'll not say it's a debate. It's going on right now onto the hand of Stack. Let's let it be. But right now we are talking about this match, and this is IZN are in the creator with the Granger, and with that we'll be seeing a chart pick for the first time in the tournament. I'm gonna see it. It's not been there, but a Jawhead will be locked down from the start of team Eternal Torment. So that means the Totkacha will be in the EXP lane against Mirio CC. That's the winning lane hero, obviously, from the side of Mirio. And even the winning lane is there in the MM as well, because Granger will be playing against the Harris, his natural counter. Harris' natural counter is the Granger. So both of the lane will be dominant by the side of IGN right now. Let's see what will be the jungle side for them. But with the pick of Selena, they have been spoken a lot of words from the side of Eternal Torment right now. They want to hinder the gameplay with the stun. They want to zone out the enemies. They also will be giving those abyssal arrows to zone as well. So let's see what it will be from the side of Eternal Torment. But right now we can see the alpha pick coming out from Respect is kind of sus right now. We were thinking about an assassin, but he's going with a utility without any support. But it's okay. I mean, there is a high loss. Glorious Pathway will be there to make you out from the situation. So, I mean, if you're going to dive into the enemy side, you're charging onto them, you can be back with the Glorious Pathway. But right now, we'll be heading into the finals for the second set between Team IGN versus Eternal Torment. It's your boy STZ, and with me, my co-caster Zivo will be entertaining you in this whole match, second set as well as the third set of the final. So let's see if the match goes to the fourth or not. Or the match will be ending with us. So before that, go to the, I mean, Land of Dawn. Yep, certainly gonna be waiting out for both the teams to stay in the Land of Dawn. And here we are this time. Sides being changed. Eternal Torment onto the blue side and IGN onto the red side. Both the teams gonna be just farming up until they reach the level 4. Gonna be, preparing for a team fight that is gonna be happening pretty soon. But still, it is gonna be quite the laning phase that is happening right now. And, both the teams, in my opinion, they have gone for quite the aggressive combo, but Eternal Torment going for the pick off with the Jawhead in their hands and followed up by Puni on that. So would be interesting if they do pair it out quite well. Same with the side of IGN as well, because they have the Hylos which can force out any team fight with this Glorious Pathway. So both the teams, they have got to have their, oh my goodness, already a first blood in the hands of Eternal Torment this time. Kudos to Eternal Tom and GG play coming out from them. They managed to, hit that abyssal arrow onto the high loss, and Zolden got into the hand of Team Eternal Torment. He's the first blood, guys. IGN giving the first blood to the side of Eternal Torment. Not a big deal because we have seen that in the first match, but then we saw the comeback from the side of IGN. But right now, look at that. The poke is coming out from the top side. They're trying to gank on it before the river area will appear soon into the map. The turtle, the neutral objective will be soon into the map. Before that, they are trying to take on the Eternal Torment's gold laner, but they will not be able to do it as the team are right now getting back into the zone. Spear of Alpha to whom? Respect. I don't know what he was going for that at that moment. It's okay. Maybe he thought someone is there in the bush. Might have been a clutch, but yeah, both the teams, I feel like they are playing it out quite
safe and just waiting for the right time to engage in a team fight. The Turtles starting from the side of IGN. And if we look both the teams, they have gotten their level 4 already. Mocha definitely trying to go for a zone Zozen as well, but look at that. Obviously, right now we see a fight coming on. Glorious pathway with the action, but AOG, Spear of Alpha again into the action from the side of Team Respect. Oh my goodness, that is sliver of HP managed to get back into the safer zone, but the position of Mirio is too bad right now. Turtle been secured by IGN, but CC will be devoured from the side of Eternal Torment. Again, the Spear of Alpha will be the answer from the IGN. They were not getting any fatalities from the side of Eternal Torment at this moment. 3-0 is the score. For non-trade is the action from the side of Eternal Torment. Even though the Turtle got won by IGN, the trade being on to the side of Eternal Torment at this moment. Yep, certainly. So first turtle does not give us much gold, so it won't matter much. But Eternal Torment, they have been having the upper hand in their side with the 3 kills in their hands. Oh my goodness! But 1 kill onto the side of IGN this time onto the bottom lane with the Respect and Muriel taking their first blood for themselves. But you know, Ash TZ, we do see Harry kind of struggling against the Granger right now because of the pressure applied by Zozen as well. Jawhead kind of needs to pay attention onto his goal laner because into going into the mid to late, it is gonna be the goal laners which is gonna be having the main damage output. Obviously, and we can see that right now the Selena is zoning out quickly as soon as possible, and she's doing great work from the side of Eternal Torment. Even though the first kill for IGN being secure at this moment for Respect, but still they are kind of having that backlash. You can say, not a big thing, 100 gold only, but still, losing the gang is not a great thing for them in the start. But they know how to make their comeback. We just saw what just happened in the last match. But right now, you can say that both of the teams are playing very defensively. They're not going for unnecessary kills, unnecessary ganks, unnecessary attacks. We do see in Indian community tournaments brawl server gameplay, but right now IGN as well as Eternal Torment being defensive from the very beginning of the match. But look at that. Oh my goodness. This time the ejector play will be into the action. But before that, the high loss is right now charging on to the two enemies. And Spear of Alpha will be into the action. The Selena will be devoured down. And at the sliver of HP. Jaw had managed to get back into the safer zone, but going right now onto the front. Cotton Coil will be into the action, and the revitalizing will be helping the CC to get some HP onto her. But Jawhead will be enough from the map right at this moment. Second turtle to the hand of I. Yep, both the neutral objectives secured by IGN right now and the score as well even out and goal lead in the hands of IGN this time. So slowly but surely they are clapping back while applying more and more pressure towards the side of Eternal Torment right there, just getting tormented here and there. And I feel like they are kind of lost as to which lane to rotate to because the pressure has been equally divided from the side of Team IGN and kind of confused on their foothold, but you still need to have your control over your own turret so that you do not give away the map control that IGN is trying to take right now. And Zoden just going around going for the traps, just taking away the traps so that they do not have any problem. But oh my goodness, 1 versus 1. Yep, charge from the Suyu, but not much for Respect. He will be fine because you see, they got the turret at that moment. I told you that both the lanes are winning lane. Granger against the Harith is a winning lane. CC is already a winning lane hero in the EXP. No one is there to counter her. So many people says that go with a Phobias, go with a Yuzong or Glue. It does happen, but right now the Glorious Pathway with that Rejector play will be into the action by AOG and the Death Sonata for that Gatot Katya. Story being there, but at the level page with that Halo. But in the meantime, the off cam, the bot lane, we saw a kill coming for that CC onto that Suyu. 1v1 going on. CC was doing unfair. Mirio was there. Unpairing the 1v1, I can say. Yep, definitely. Quite a big mistake opening out the CC, given that she is the natural counter of Gatotkacha, but oh my goodness.
Again, the fight break out at this moment. Crimson Bacon, and it will be Rhapsody coming from the God, taking down that Jawhead from the map right now. And look at that, Diamond Force again, and the Chrono Dash has been coming on, giving a lot of damage to the Jushin. The Flicker will be up to be into the safer zone, but he will be fine at this moment. One for non-trade for the side of IGN. Getting again the third neutral objective, three into the hand, goal into the hand, everything into their hand. Yeah, jeopardizing the whole moment. Yep. Definitely more and more pressure onto the side of Eternal Torment right now, not letting them even take the farm as IGN is just terrorizing them, tormenting them as of all the lanes, and just having the misarray of every single lane, just losing out and giving more and more pressure onto their side. But Zozen on the other hand trying to go for a dive. He does have his glorious pathway, so he can force out any team fight as soon as his team has. Oh, there we go. There you go again. A fight is breaking up over there in the top lane at this moment. But Death Sonata will not be much to take down any enemies at this point. They managed to flew away from the situation, dismantling themselves at this moment. But right now, at a very bad position, the Jawhead is being there. He's running away from the situation. But the turret, it will be taken down from the side of IGN at this moment. They get the lane pressure as well at this point. I mean, dominating the whole game. The second set goes to IGN, I think so. I don't think Eternal Torment at this point they can make their comeback. But look at that. Maybe, just maybe, one clutch moment from the side of IGN might be enough for Eternal Torment to turn the tides up. But time is gonna be telling us what the results are. But Flicker wasted out by Jawhead, trying to go for an ejector, but ejecting onto the wrong side. Quite a big resource wasted for the side of Eternal Torment right here. And even the Lord, right before the Lord, just getting more and more pressure. Once again, look at that. Glorious pathway is pure of Alpha. Force swing. The Gatot Kacha will be eliminated as well as the Jawhead will be taken down by the Granger. And the God right now showing the godly skills. At this point, the blasting is up, but the minions will be taking down that blasting. Hylos at a very bad position, getting a lot of damage from the fusion. But he'll be fine. Revitalizing will be on from his side right now. Whole IGN squad is going on to the Lord. He'll be taking it easy. It's a free one for them. He's coming with the Lord Zevo. What do you think? Will it be the end? Oh, might be, because the Lord is gonna be putting on a lot of pressure as well. But once again, another engage. Another engage onto the top side. The turret is being on right now. Curtain call into the action. Gatot Kacha going off to the place. But Jushin will be taken down with the Selena being there. I mean, playing a gutsy move. Outplays the Jushin at that point. Which will be going to the heaven side. But before that, we can see some crit push coming from the Puni at this moment. Certainly. So, Eternal Torment, they need this kind of clutch moment from IGN to have their game, have the game back onto their hand, because segregating and taking out is something that they need to do, given that all of Team IGN together is not, they're gonna be quite, having the upper hand in a team fight, so they have got to be putting another tactic onto their play, but still have to defend this Lord. But the question is, will they be able to come back in this game? Obviously, we're right now. Look at that Spear of Alpha from the Respect at this moment. The Jawhead will be taken down as well as the Gatot Kacha. Killing spree for the God. The Lord is entering into the base. Jamin Force being vested up. At this moment, they will be locking the base and the Suyu will be there. But again, the Spear of Alpha Force swing, giving a lot of damage. He will be dismantling at this point, but the Lord minions are getting into the track at this point. The Abyssal Arrow will not be much to save the base, defending it from all these sides. Eternal Torment managed to defend it. That's a nice move from them. They're trying at least. Yep, certainly. Trying their best to stay in the game to be able to... Okay, there we go. Ejector. Ejector, yep. Ejector at this point. Zaman Force also. AOG. 3 ults onto the Respect. Take him down again. Look at that Witch at a very bad position. Will not be able to get back, but the Crimson Bacon for the safer side will not be much mobility coming from the Puni. Will be locked at this point. Curtain Call trapping down those two people. Glorious Pathway giving a slow movement speed to those enemies at this point.
And it will be Gatot Kasha being taken down. Rhapsody and the Death Sonata. Kalina will be taken down, eliminating that Gatot Kasha. Double kill for the Zozen. Minions are right now getting into the base to you, and the Harith will be there to save it. Diamond Force again. Fusion coming from Death Sonata, and it will be Rhapsody taking down their Harith. Unstoppable double kill for the god. They will be locking the base at this point. Minions are not there yet, but they will be taking down that inhibitors. Zevo, Yep. wanna end it? On their way. Oh, 1 minute left. Oh, there we go, Mocha. Okay, does not will not be able to defend the base. Around the part where the top inhibitor was about to get taken out, right? So there was a team fight, and Team Eternal Torment, they did get the win kill onto their side, but the thing is they kind of overextended by having to chase after the IGN members, and that kind of gave the upper hand that they were getting away from their hands once again. As Team IGN, they were just buying time to have their whole have their whole skills reset and everything to be set up again. So kind of a overextension that kind of gave the game away once again from their side, because it was quite a comebackable match if they had been a little bit more patient and just waited for IGN to commit one mistake or the other. Maybe it will be harsh to say, but whenever IGN see some E-name teams, they get fierce. Sorry for that. Sorry for that. I was just joking. I'm just kidding, guys. And with this, we'll be taking a short break so the third match gets up. So be ready for it, guys. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Hit the subscribe button, share the stream to your friends. Don't forget to hit the like button, and don't forget to comment down who's gonna win, ET or Eternal Torment or IGN. This is not the ET I'm talking about. Eliminators. They are not here. It's Eternal Torment versus IGN going on. So let's see who will be winning, IGN or Eternal Torment. The match point match for IGN, of course, and a do or die for the Eternal Torment. Let's see what. Alpha, my dear doomed king. The time has come to cast away that frail mortal shell. Join me in eternity. Hello, everyone. We are back into the action. This is Peak Up Esports Premium Arena Grand Finale between IGN versus Eternal Torment right now. BO5 is going on. If I will give you a small insight, which I always give, IGN won the first set, even though the Eternal Torment having the dominating side from the first half, we can say, but then we saw IGN getting rise into the action. They won the match, the first set. Then the second set was totally dominating from the side of IGN. They just took out all those meta picks into their hands and managed to take down the second game. Right now, we are here into the third game, a match point for the IGN and a do or die for the Eternal Torment, as I already been said that. It's your boy STZ in the casting desk, and with me is none other than my co-caster right now, one of the greatest female caster. Vivo is with me. Vivo, what do you feel? Will this be the end, or your thoughts were like 4-1, but right now we are going into a 3-0 maybe. I kind of hoping Team Eternal Torment gets a comeback, but they did try their best in the first and second game as well. So kudos to them.
So it's quite exciting because it is going to be the match point for both the teams. If IGN takes it, then it's going to be a clean sweep. If Team Eternal Torment does make a comeback, then they will still be in the game. So it's always fun to see, with the chance of a comeback happening. But looking at the bands, quite the standard bands coming in from both the sides. Gonna be all of the heroes that we saw in the previous two matches. Nothing quite out of the ordinary. But I feel like Team Eternal Torment, they kind of need to target Aaron, the creator, right now, because he is being the main damage dealer of IGN, and they kind of need to have a chokehold on him, so to be able to have quite the control over them. But yeah, we'll see what their game plan is right now. But okay, IGN decides to ban out Muriel's phobias themselves. Quite interesting, even though they have the first pick. I think they will going with the Harris pick at this point. If the Hmm. Phobias ban is on, maybe they're going with the Harris pick, or maybe they're thinking something else. But before that, I'm kind of surprised that they didn't went for the. I mean, the previous one we saw they went for ban onto the Fanny, and as well as they went for a Sicilian ban. This time they didn't went for that. Went instead of that they went for the Phobias ban. It's okay, as you said, the Meteor's Phobias, but they still went for that. Maybe I'm the creature planning for the Harris, as I said, but let's see what happens. I'm not sure about it, but on the Eternal Torment side, they will be fixing at that Lucas again after the Phobias ban. It's kind of same ban from both the sides. What just happened in the last match? Let's see what will be the first pick for the side of IT. And a lot of heroes are open at this point. And I'm sure they'll be going with the Tushin again. Yeah, Yep. Zushin as the first pick coming in from IGN. Once again, Eternal Torment, they have the chance to pick up the Sicilian right now because those two are the top mages in the current meta. And I think they kind of go on par with each other. So kind of can take that into consideration. Same with the marksman as well. Herit and Granger are both open. So it's going to be a give and take for both the teams, but the question is which team will take which hero. So still, if they decide to go for a high loss, maybe that can also work. Since high loss does have a lot of sustain, they get the gacha same as well. A lot of heroes can be picked out by the side of Team Eternal Torment right now. There we go. High loss paired with a joy this time, taking advantage of the phobias getting banned out. Just gonna be taking the dash heroes. beautiful prediction from Zevo as well. I mean, that high loss prediction was on to the point. And then the Joy pick, it was, I was not thinking about it, even though I think you don't have been thinking about it as well. I was thinking maybe first, maybe Sicilian was open at that point. You could have gone, as you said, they could have gone with that, but they went for the Joy. Too early for them, but look at that. I was talking about the Harris pick after that Phobias ban. Didn't listen to me. They're going with the Harris pick at this point again, and the Thought Catcher will be there for the side of Team IG and Zozen with the Gato. I mean, this guy is just a replica of Kimi. I say you. He always pick just like the Kimi does. So it's like he also plays like Kimi so much. So I mean, I'm happy that they got the replacement of Kimi as the second Kimi for them. And right now, let's see the last pick from the first phase. Aura Farmer. What he's thinking about right this point? Granger is open. I mean, it's a bait, Zeebo. They're just baiting the point at this point that go for it. Go for the Granger. We will be playing with the Harris at this point. Harris is Yeah. baiting his Granger. Okay, they will not going with the Granger. They will be with on to that CC pick for the EXP. Now this is a big question that CC is a winning lane hero. What it will be from the side of Mirio at this point, because to counter a winning lane hero, you need another winning lane hero, just like Glue or Yuzong. Yuzong in this meta doesn't work perfectly. Glue, that's kind of a question. I mean, Initiator, but in this meta, in Indian community, I don't see Glue players rising as well. But they will be going with the Badang ban. That's a nice 2 point ban at this point. Doesn't want to give that Badang against the PC.
Yep, certainly. IGN, they kind of showed on to the Badang, so we'll be banning them out. Might be a bait though, who knows? But yeah, same. The Granger is still open, so might be a trap set by IGN right now, but I think they can still go for the Granger and maybe a carry for the Herit and maybe for Gatot Kacha as well. Can melt the frontliners if you get enough farm onto your hands, but Mocha Wiki on to the CC. If IGN is gonna be going for the Gatot on the EXP, then it is gonna be quite hard for them. But EXP was already shown, so they can keep Zozen on Gatot Kacha onto the roam position and pick another XP, which is good against a CC. But once again, chip ban coming in from the side of Team Eternal Torment. If, Quite, if quite interesting. Quite interesting. you know what, this is what we got taught during the casting. Training program. That there is a thing named as bait pick. Whenever you see a Beleric ban, you will go for Melissa and Mia ban as well in the rank. We do just think that right now you can say that they just showed a flex pick thing. Gatot Kacha being picked up. Eternal Torment thought that Gato will be on to the EXP side. They literally went for that CC at this point, and they thought that Zozen will be on to that chip. They banned that chip. But what was the thought of banning the Badang? I mean, after banning the Badang, I thought they would be thinking about the EXP. They went for that chip ban now. So much thinking. Eternal Torment being overthinking at this point, but it's okay. I mean, they must be thinking something. They must be having some plan at this point. I'll not judge them. But look at that. Again, those pretty same bans. They lost the trade at this point. They went for that high loss. They went for that joy against the Cecilian. Will it be hampering them, Zivo? Quite the possibility there. Quite the possibility. Oh, okay. Silent on Aurora this time. Quite the forgotten hero, but she does provide a lot of AoE CC, and Puni on the Joy should be able to cover up on her, Frigiglacia would be pretty good. Okay, there we go. Respect will be diving onto the back line with his Hayabusa. Another signature pick, I would say. Oh, Arlot getting shown off by Mirio this time would be another interesting pick, off meta pick, but still it should work. But for the side of Team Eternal Torment, they do not have their marksman yet, so keeping it for the last, as the last trump card for themselves. Kind of thinking of a Moskov because of his SOD and also his backline diving potential, a split pushing potential as well. Kind of hoping for that one. Ranger is still open. Kind of thinking maybe a Claude as well because of his engage and disengage capability. So will be interesting to see what Aura Farmer here goes for the marksman. I'd love to see a Claude at this point, Zero, but they're going with the Moscow. I mean, that does work, but Claude would have been a great pick at this point, as you mentioned it. And look at that. I mean, if you're going to see the lineup from the side of Eternal Torment, they're kind of defensive. I mean, in the early game, they'll not have that much potential to take on IGN. But look at IGN side. I'm not getting biased on the IGN side, guys, but look at them, the lineup. If you want to see Jushin is early game hero, Harit is early game hero, Gato even having that early game damage, Hayabusa, we don't have to talk about him. What he is in the early game. He's a menace in the early game. And even that the Hilda is having the invasion potential. She's also an early game hero. So right now the whole IGN will be in attacking side, and just the mage pick. Look at the mage pick, Aurora. They're going with the defense. Hylos. They're going with the defense. When the Joy is there still, I mean, who are you gonna catch up? Harith does have a mobility. I don't think Joy gonna catch him up. Or if you're gonna talk about Jushin, after Crimson Bacon will be there, it will not be easy to catch up the backliners at this point. It's okay.
They took the lineup. They've already been on. We are here into the finals, grand finale from the premium tournament, that is Premium Arena, powered by Premium Cup Esports, P Cup Esports. And we are here for the finals between Eternal Torment and IGN. This is the BO5 finals, and we are here for the third set. Inside is like that. IGN having the 2 points. They are in the They are playing their match point match. Do or die for the side of Eternal Torment. A great start for the IGN, already dominating the goal lane as well as the EXP. And a little bit of invasion also coming from Hilda. Revo, please take over. Yep, definitely a lot of invasions coming in, but look at that. Betoski might be in danger as he gets picked up by the Lantern Flare coming in. Oh, there we go. First blood in the hands of Respect, and the first score going onto the side of IGN, this time with a 500 goal lead in their hands, and the first turtle about to spawn soon, quite fast. And the for the side of Team Eternal Torment, they are getting quite the invasion from IGN, just not letting them farm as well, because Puni, he is quite low. He does not have his level 4 yet, so he kind of needs to farm up. But the thing is, he's not getting the farm at all because IGN is invading their farm like crazy right now and just not giving them any time. But hopefully, we would see another engage near the turtle. I don't think Puni and Co will be fighting for the turtle, but before that, Oogie Shadow kill into the action, and second kill for the Hayabusa in just 2 minutes of the game. Going for the turtle at this point after getting those 2 kills onto that CC. And this is not a good thing for the side of Eternal Torment. The start is not so good for them, being at the stage of do or die. IGN being playing that match point set, having this start is literally feasible for them at this point. And look at that, they're invading the jungle. I told you, they got the Hilda, they got the invasion potential from their side. They are attacking lineup, and look at that, they're going on to the 2 people. Blizzardgation into the action. Even the Gatotka being there, but that Crimson Baker is literally giving a lot of damage. Hylos will be taken away. The Thothkat at the sliver of HP will be using the AOG to get away from the situation. And AOG after that, killing free for the Hayabusa onto the CC. But this time the Respect will not be there to show his respect towards his team, because the Joy, the Puni, will be taking out double kill at this point for Eternal Torment. 2 for 2 trade coming out from the side of Eternal Torment at this point. The turtle goes to IGN. Trade won by them. Definitely, IGN just asserting dominance right from the start, looking to end the match in a 3-0, but Eternal Torment won't be backing off as well, as they are trying their best, just taking out any possible measure that they can take against IGN for them to win. But Zushin has been quite an annoyance because of her displacement ability. Like, look at that. Betoski is just getting bullied by her Lantern Flare, just not being able to do anything, because even if you have the Purify, if you get the Purify, it is gonna be just wasting out, because the Lantern is not a skill which has a cooldown, so you still just waste any of the resources. But yeah, maybe pressure onto the top lane once again, although the turtle is onto the bottom lane. Might be shifting slowly but surely. And another engage around the blue buff. Obviously, and before the turtle being up right now, we can see the power of wilderness will be taking down that CCAOG onto the 2 people. Aurora managed to be there, but she'll be fine at this point, having the passive onto her. Look at that. Turtle dance already started. Puni and the Co will not be contesting for it as well. Turtle being freely onto the side of Team IG, and they're going to attack on them. No, it is Pantling at this point. Using the reverse side, going onto the going onto the bot section to take on some goals. Before that, they're going onto the jungle side of Eternal Torment again. They are ganking on again onto them. Hylos being there. Glorious Pathway popped up. Revitalizing being on over there. Blaze of Glacier right now stunning that Gatotka. But at this point, look at that. The Moscow with the SOD managed to take down the Witch at this point.
The sliver of HP, the vengeance being used, and the Ugi Shadow Kill will be taking down the Moskov. Harris being on to there. Aaron, the God, will be taking down a double kill with the Examine Force, and that instant redemption will be coming out from Aurora. That is silent. He will be silencing that Aaron, the God, taking down him with some damage. I mean, I was thinking for a defensive setup for that Aurora, but he's managing to take down some damage as well. Yep, Aurora is playing quite well right now, playing it safe. Oh, Glorious Pathway, baited out. Again, and the Gatot Kacha being there, but the Hylos will be taken out at this point. Look at that. I mean, Gatot Kacha didn't come at the time. I was thinking that he would be there soon, but we tried to save him up, but Respect was in a very bad position at that point. And look at the damage from the fusion. My goodness. It's too much. He's just melting that tank. Yep. This is Again, what. the power Oh point. my goodness, Mirio! The amount of damage that is coming in from him, right? But Puni is trying his best with this electrifying beats, which will be getting taken out. Mirio is forced to get back. So back to my point, the farm from IGN, they do have quite delete 1k gold in your hand. So the items are gonna be dishing out quite a lot of damage, so you kind of need to stay at bay as well. As we see Hayabusa on to his second item right now. All of the members from IGN, they already have their first Herod already onto his second build right now, and he's gonna be dishing out more and more damage because those two are his 4 items. But once again, bottom lane off camera kill, Respect taking Joy out, will be escaping. He'll be escaping because the team is right here helping. And look at that using of the quad shadow right to point. He managed to survive from that CC at this point. Cyclone Eyes being off over there. The joy got deleted from him in the off cam. And Zero, did you saw that? I mean, even though Puni is having the backlash, but still he's manning the gold. I mean, and look at that again. Ogi Shadow Kill 1v1 going on to that bot side. Not be able to take down the CC because of the range, but will be losing that turtle at this point. The retreat battle will not be there. No contest from the side of IGN, but the Zaman Force and the power of wilderness. Killing spree for the Mirio. Mirio being the star boy of this show, taking out all those kills, giving us GG rotation from the EXP to the turtle lane. Yep, certainly. Even though the turtle was worn out by Eternal Torment, IGN, they managed to find the trade by taking the members out of Eternal Torment, right? So quite a good trade coming in from both the teams. But still, one more turret down for the side of Eternal Torment. IGN just trying to assert dominance onto the map right now by taking out the first tier 1 turret onto their hand, and Mirio getting a bit pressured, but still not enough for him to back down. But look at that, Zozen just protecting Aaron the Creator right now because he's gonna be the main damage dealer, while Mocha and Betoski are trying to go for an engage, but will be backing out. Bottom lane though, Medio forces out the blink from Aura Farmer, will be getting away. Mid lane, a little bit in danger, but SOD will be missing out as Team Eternal Torment gets more and more pressure just coming up here and there. And at this point, they just gotta wait it out like how the last match happened. Yeah, I mean, they're taking up the time. Maybe they will be back soon. I mean, Moscow is there. They got the late game potential into their hands. So they're taking the game into the late side so that they will be giving some damage to the IGN. But if IGN will be having the early snowball, they will not give it any chance to them take on the game into the late. Look at that. Catching up that joy at this point. The Fusion will be giving some support as well. A mega kill will be secured from Mirio. Mirio, I told him that he's the star boy of this show. And look at that. And a sliver of HP. The high loss will be caught up again. And it will be the god, the creator, Aaron, will be taking down that high loss. And they'll be taking down a mid first tier as well. And they'll be going for the Lord as well at this point. The SOD being connecting on to that Respect. I don't think it will be coming onto that place. Otherwise, he will be wasting his aura for sure. If he would have been, I mean, contesting for at that moment. But right now, the Lord free for the side of IG. Yep,
Lord, no contest of Lord coming in from the side of Eternal Torment, because they know if they go for an engage, then they're gonna be falling out quite badly. So they're gonna be waiting it out, wait for the Lord to come onto their side so that they can defend. But respect and his positioning right there, dishing out one or two hits onto Wiki, and still not having the full engage, because he does need his whole team for the engage. But oh, Again, look at that vengeance is popped up right this point. Blizzard Glacier shipping on. CC will be taken down. Aaron the Creator. Some magic at this point into the land of dawn. Even though the Blizzard Geisha was there, Ogi Shadow Tail into the base at this point. Look at that, managed to take down the Joy, even though he was using the Rhythm of Joy to get some kills. I mean, get some HP, but he doesn't got that chance. Life now, Lord entering into the base. High loss being taken out by Mirio, and right now they're locking the base. At this point, the minions being there, IGN on to the verge of winning the match. The minions being on at this point, they will not be having the winning moment. But before that, CC managed to get down that respect. But Mirio again saving up the game. Monster kill for the Mirio, taking down the CC. Match is not end yet. Eternal it's not. Torment managed to save their base. Yep. Oh, that was quite a heart attack moment for Eternal Torment right now, right? Because their base was wide open and IGN was just attacking, locking it out. But they still managed to defend their base, get one more chance in the match that is happening right now. But for a moment, I thought IGN almost ended, but it was quite the timing that they were almost out of minions. So they still gotta watch out their base though, because with the inhibitor gone, the super minions would still be coming. So they Yep. still need to watch it out, because those are quite tough. But oh, Puni, Rooney with the electrifying bits at a very bad position, overextended, but mega kill will be secured by that Aurora. Silent is right now giving some silence to IGN as well. I mean, at that base moment, if you will see, Silent do matter a lot at that place because he got some kills. And right now, again, managed to silence that respect. And again, we can see the Lord will be up soon, but before that, the minions are getting into the track. Sodi again managed to take down Puni at this point. Sodi didn't connect it, but we just saw what just happened over there. AOG coming back into the action. Hylos at a sliver of HP wants to get back with the revitalizing. Aaron will not give it any chance at this point. Taking down the Hylos from the map, eliminating him as well. Two-man down from the side of team Eternal Tom and the whole IGN squad right now going with the minions. I think they will be finishing up the base. They'll be taking up the Lord at this point. Zivo, is this the last Lord? might be, because IGN might be planning to go full on with the Lord. And sadly for the side of Eternal Torment, they can't contest the Lord, given that they do not have anyone to dive onto the back line. Even if they do, they will still be stopped by Zozen and Mirio, since they are the front liner right now. So they gotta play it out safe. Once again, wait for the Lord and wait for the right timing to have a set. But Puni may be trying to do some damage. Oh, there we go. Rhythm of Joy. Just getting used to get back safe and sound into his base. Obviously, I mean, the X Factor, Mirio being giving a lot of damage. But before that, what was that? What was that? Spear of Misery and bring Misery for respect. Right now, taking down the Jushin, which will be taken down. Electrifying base, giving a lot of damage, revitalizing into the action. Oh my goodness, look at that Gatotkacha AOG. And it will be after the creature taking down the Puni. One man down from the side of Team Eternal Torment. The Lord is going on. But the damage coming from this aura. He's literally the aura farmer. He is farming the aura at this point, taking down the Lord, but two-man of the IGN, giving some hard save for them. But right now, Nation, at last, shut down for the Star Boy. He will be taken down. The CC managed to take down the Harith. Will it be a retaliation from the side of Eternal Torment at this point? IGN throwing up this match. Immortality is off. But the Aura Farmer right now farming some Aura at a sliver of HP. The Glorious Path will be slowing down, and it will be Gato being taken down. Zozen and the whole squad, the IGN, Witch, Zozen, everybody will be taken down. Even Muriel, the Starboy. Yep.
Certainly, Aura Farmer just dishing out a lot of damage in his hand. Same with Silent as well. He has the Aurora in zero deaths, so he's been playing it out quite safe. But once again, it's OD connecting. And yup. And look at that. Managed to take down Respect at this point. Slaver of HP. Glorious pathway been fogged up. He will be pulled down. And it will be Mirio right now taking an instant redemption for his kill. You're shutting him down. He'll be shutting you down as well. The Star Boy is on into this match. He's the MVP. Lose or win, he's the MVP for IGN. Yep, definitely. And Eternal Torment, they managed to, have their gold lead back into their hands. And on par with IGN right now, the main issue for IGN to face is Aura Farmer Yup. and Silent, both of them together, because they are the ones, providing the CC, dealing all the damage. And it's Moskov in the late game, so he's gonna be hurting quite a lot, and with his dash skill, he is gonna be quite hard to catch unless you have someone to have a full CC, full stun onto him. But it's not the case for Aizen right now, because even if they have the Zushin, Moskov still can Yeah. get away from the lantern flare, so he's gonna be quite slippery for their side. But the Lord, third Lord this time, which both the teams might be contesting, as we do see quite the positioning coming in from the side of Eternal Torment as well. I mean, a free lord again. Victory battle will be won by Respect. Again, the SOD being connected. Ogi Shadow kill AOG into the action. Joy being taken down. Double kill for the Respect. Blizzard Glacier into the action. Killing spree for the Moscow. Aura Farmer right now farming some Aura. At a flavor of HP. He will be caught down from beach. Shut down for the Aura Farmer at last. Minus 999 Aura. And it will be a killing spree. Not a triple kill for the Respect. 4-man down. Only Silent being there. Will it be Mirio's Aura to take down that Silent? Because no one from IGN yet taking down that Silent in this whole match. Look at Mirio. He's being excited to win this match with a higher push out with the quad shadow and the Ogi shadow kill. The passive will be up, and before the collision will be into the action, the base got tormented. Congratulations, champions! IGN, the OG IGN will be taking down the match, will be taking down the final as well, will be taking down the crystal as well. Congratulations, guys, for winning the finals at Peak Up Esports Premium Arena. A premium winner is our premium team IGN. Eternal Torment tried their best. Aura Farmer tried his best to farm his Aura. But in the end, it was all the Star Boys Aura. And Respect's Aura as well. Definitely a clean sweep coming in from IG, and the experience speaking for themselves, right? They're just being patient throughout the whole match, even in the first match as well, and just showcasing their whole experience that they have collected throughout all the tournaments that they have participated. Some win, some loses, so it is experience that matters. You gotta learn from your mistakes, look back at your mistakes, and gotta be more and more better at what you do. So kudos to Eternal Torment as well for finishing up this far, being the runners up for the premium for the premium arena, right? So that was quite a good match that we got to see, and we hope to see Eternal Torment in other tournaments as well, shining their way through, and hopefully we'll get to meet again. Yep, obviously, congratulations, IGN, again for winning the match. And with this, we will be signing off. Me, STZ, and Jivo from Peak Up Esports from Premium Arena. And we'll be meeting you all in some other tournament for sure. But before that, thank you for joining. Thank you for watching the match. It was a great match, a clean sweep from the IGN side. Even though Eternal Torment tried their best, as Vivo said, they will be shining again in some other tournaments. They were the finalists, after all. They came so far, but it's okay. I mean, it doesn't work today. It was the night of IGN. You're playing against the OG squad. So you'll be learning, you'll be rectifying your mistake as soon as possible, and you'll be coming back stronger. All the best for your future journey, Eternal Torment, and congratulations again, guys. Which
and the God, and respect, and obviously the star boy Mirio and IGL Zozen. Congratulations, guys! And with this, we'll be going. Off. Bye, bye, guys. Good night, everyone. Thank you for joining. Thank you for watching. Love you all. Sabak. Alpha, my dear doomed king. The time has come to cast away that